मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, 50,000 अफ्रीकियों की करेंगे मदद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कूटनीति, रणनीति और समझदारी के लिए जाने जाते हैं। दुश्मन देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाब देने की बारी आती है तो भी विदेश मंत्री ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला घायल हो जाता है। यही है भारत की ताकत कि उसके पास एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री हैं जो किसी भी मोर्चे पर भारत की ताकत को दुनिया के सामने अच्छे से रखना जानते हैं। अब हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अफ्रीकियों के लिए बड़ा ऐलान कर रही हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में युगांडा पहुंचे। एस जयशंकर का ये 3 दिवसीय दौरा था जो बुधवार को खत्म हो गया। ये दौरा 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चला, जिसमें विदेश मंत्री ने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से रवाकीतुरा में मुलाकात की। इसके बाद युगांडा के अपने समकक्ष जे ओडोंगो और रक्षा मंत्री और पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री विंसेंट सेम्पिजा से मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों में खास रही। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा हुई। इसी के साथ व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और वायु संपर्क पर भी बातचीत की गई। जयशंकर ने इस मुलाकात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी। युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी से रवाकीतुरा में उनके फार्म हाउस पर मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल और कृषि क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। एनएएम की अध्यक्षता संभालने पर युगांडा को बधाई दी और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर हमारे मजबूत समन्वय की पुष्टि की। 2022 से 25 तक की अवधि के लिए अफ्रीका की ओर से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता करने के लिए युगांडा का समर्थन किया गया। इस खास मुलाकात की कुछ तस्वीरें एस जयशंकर ने अपने ट्विटर पर भी साझा की हैं। इस खास मौके पर जब विदेश मंत्री को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल एस जयशंकर ने 45,000 से ज्यादा अफ्रीकी छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद करने का ऐलान किया है। विदेशी जमीन पर एस जयशंकर का यह बयान बताता है कि भारत आज इस मुकाम पर है कि वो अपने मित्र देशों की मदद करने से, उन्हें सहयोग करने से कभी पीछे नहीं हटता। युगांडा में एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। Maybe a minister, but I'm also a member of parliament. So I want to remind all of you that I very much, in a way, have the same feel, the thoughts, the interest, the mindset that many of you have, and I am particularly pleased today at meeting all of you because in my own country, I know that when members of parliament take interest in foreign affairs, when they commit themselves to furthering any relationship, it's a great source of strength for those ties. Every foreign minister listens to their MPs, trust me on that. So I'm sure that when all of you collectively express your interest and your commitment, my counterpart must be feeling the same thing. Now, at the beginning, a reference was made to the more intense relationship that we've had in the last few years, and that is indeed the case. We've had from India, Prime Minister Modi here a few years ago. Many of us remember particularly his address to the Parliament, because he actually used that to lay out our Africa policy as well as our development partnership policy. So even in our larger dealings with the world, we refer to it as the Kampala principles. So it's something which is really very significant in our foreign policy. But we've also had our Vice President here, who's the Chairman of the Upper House, our Speaker, my colleague who's the Minister directly in charge of African Affairs, and I myself am here. And I hope between all these visits it completely convinces you really how serious we are and how much we look forward to taking this relationship forward. We had President Museveni visit India last during the India-Africa Summit in 2015. It was our hope, of course, that we would do the next summit. It has slipped, unfortunately, due to COVID. But despite the COVID, what I do want to say is whether it was the commitments made by Prime Minister Modi when he came to Uganda or the commitments we made at the India-Africa Summit, we have kept those commitments. And one of those commitments of which we are particularly proud of was
we had committed really to provide educational and skill access to 50,000 young people from Africa. Despite the COVID, we've actually reached in excess of 45,000. And when we look at the next generation, for us the next generation is not only the next generation in Parliament, which we give a lot of emphasis on, but actually the next generation of leaders and policymakers and professionals and implementers in this society. तो देखा आपने किस तरह से विदेश मंत्री ने युगांडा की जमीन पर यह बड़ा ऐलान किया। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर